if somebody has like a poor gut health, हाँ. ठीक है, और अगर उनको डेली लाइफ में ऐसे कौन से साइंस पे ध्यान देना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उनका गट खराब है? Look at your poop. That's Okay. the best indicator. मतलब आपका poop कैसा formed है, क्या color है, कौन से time पे आ रहा है, कितने frequency में आ रहा है. There is an entire chart known as a Bristol stool chart. ठीक है, that will tell you कि which category you fall in with respect to your stool. Yeah, if you don't fall in the category 4, 3 and 4, which means that you really need help. You have to be in that category of 3 to 4. मतलब आपका 3 to 4 वाला category आपका stool का होना चाहिए. अच्छा. If it is in first and second category, which means that you are constipated, या आपका gut motility मतलब खाने का जो transit time है आपके gut के अंदर वो बहुत ज़्यादा weak है. If you fall in the 5th, 6th, 7th category, which means that day on day basis you're consuming something which is acting up as an irritant for your gut. आप हर रोज वही कुछ खाना खा रहे हो जिससे आपके गट लाइनिंग को इरिटेशन हो रहा है, विच इज वाई बाबल्स एकदम लूज है. यू आर नॉट हैविंग इनफ फाइबर, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, विच इज वाई यू आर नॉट हैविंग वेल फॉर्म्ड स्टूल्स, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है. सो दैट वन चार्ट इट विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. It will also indicate if whether you're dehydrated or not. Wow. Yeah, it will help you with a lot of things. If you just start looking at your poop and analyzing it, that can be a game changer for you. Wow. Yeah. So if you want to know where your gut is at, you can observe your poop on regular basis, and maybe this chart will help us know better where we stand. Yes, and it's known as the Bristol stool chart. Bristol stool chart. Okay. You know, these days so many people are simply constipated. उनको सिर्फ पता नहीं है, बट अगर एक्चुअली एनालाइज करने बैठेंगे दे आर सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड. वो क्यों होता है? यू ऑब्जर्व एनी इंडिविजुअल नाउअडेज दैट दे गो टू द बाथरूम ना, दे विल कैरी देयर फोन अलोंग. मतलब ऐसा वहां पे बैठे बैठे भी दे वांट टू स्क्रॉल थ्रू देयर फोन. ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू पूप इफ देयर इज दैट एंटायर कनेक्शन नोन एज गट ब्रेन एक्सिस. Okay. ठीक है, इट्स लाइक कंसिडर दैट एज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है ये. अच्छा. ठीक है, दिस इज योर, मतलब अगर इसका कनेक्शन होगा तो आपका स्टूल इजीली पास हो जाएगा. यू नीड टू बी कनेक्टेड एट दैट मोमेंट, बट यू जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द फोन यू आर माइंडलेसली स्क्रोलिंग थ्रू दैट फोन, वो कनेक्शन ही नहीं है. Yeah, because your brain is involved. करेक्ट, in the scrolling. करेक्ट, वो स्क्रोलिंग में ट्रैफिक जैम लगा है वो कनेक्शन के बीच में. सो एंड that is also one of the reasons why so many people spend so much of time in the washroom. It should actually be like a 2-minute activity. But you see people spending like 15 minutes, 20 minutes, about half an hour because complete evacuation nahi ho raha hai. Kahan se hoga if if your brain is not connected? Because that's a psychosomatic relationship. They are connected directly. So until and unless yahan se aisa signal nahi jayega कि now you're sitting to poop. Like stop scrolling. You're sitting to poop. So वो होने ही नहीं वाला. वो ऐसा 2-minute activity turns into 20-minute activity. Yeah. And you don't even realize. You don't even realize it. Wow. So you gotta be so present to understand where your gut is at. कैसे खा रहे हो, present रहो, scrolling बंद करो. कैसे poop कर रहे हो, but be mindful, watch your poop, and I think you will get a lot of signals. You will get a lot of data. हाँ, मतलब वो poop देख के you will get a lot of data through that poop only. बहुत सारे लोगों को stimulants लगते हैं to poop every day. Correct. Okay, so there are people who resort to cigarettes, to some kind of concoctions, so that they feel the pressure. तो कौन सी natural चीजें लोग कर सकते हैं so that they can poop well and every day? So traditionally, if you look at us Indians in general, you know the washrooms that we had back there in the past. Yeah. It required us to squat in a certain position. Yeah. So that made that entire process very easy. Pressure भी feel होता था, evacuation भी एकदम perfectly होता था. But because of modernization, the kind of washrooms that we have now, वो possible नहीं है. Even I know that. So instead, what I ask people is, sit in Malasana for 5 minutes every day. First thing in the morning, as soon as you wake up. And while you're doing that, you can either have a concoction,
you can either have 1 teaspoon of ghee. Ghee also, it lubricates your intestines. It acts wonders. That butyrate in ghee, it works magic.